बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर के दिन किसी भी वक्त ये दुआएं पढ़ें। रिज़्क की, हाजत की, परेशानी की, बीमारी की, हर तरह की परेशानी ख़त्म होगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपकी झोलियों को रिज़्क से भर दे, अल्लाह पाक आपकी हाजतें पूरी फरमा दे और मुश्किलात का खात्मा फरमा दे, तो आप इन दुआओं को ज़रूर पढ़िएगा। और इन दुआओं के पढ़ने के बाद जो भी आपकी हाजत होगी और जो भी कोई मुश्किल हो, जो भी कोई तंगी हो, जो भी कोई हाजत हो, उसके लिए दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी और इंशाअल्लाह दुआ कबूल होने के बाद आपकी हाजतें भी पूरी हो जाएंगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आइए इन दुआओं को समाअत फरमा लीजिए और ख़ुद भी इनको पढ़िए और समाअत करिए और दूसरों के साथ भी इन दुआओं को ज़रूर शेयर करें। या मलिक या कुद्दूस या सलाम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, या ज़ल जलालि वल इकराम, या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल फत्ताहिल अलीम, या रहीम या रहमान, या जारल मुस्तजिरीन, या वलिय्यल मुअ्मिनीन, या साहिब कुल्लि गरीब, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल अज़ीज़िल गनी, ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम, या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला, सुब्हानल क़ाइमिद दाइम, सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, रब्बि इग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब गैरुक, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी, फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, रब्बना अलैक तवक्कलना व इलैक अनबना व इलैकल मसीर, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी, अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु अत-तौबा, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द,
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل. يا وكيل يا كفيل. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله وبحمده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في سمعي. لا إله إلا أنت استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے یہ تمام دعائیں ضرور پڑھ لینی ہیں یا آپ نے ان دعاؤں کو ضرور سن لینا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان دعاؤں کے پڑھنے یا سننے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنا ہے اور سجدے میں جا کر اپنی مشکلوں کا اور اپنی پریشانیوں کا، اپنی بیماریوں اور مصیبتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے اندر کرنا ہے۔ یہ دعائیں بہت ہی بابرکت دعائیں ہیں اور بڑی ہی مقدس دعائیں ہیں یہ سب۔ معزز خواتین و حضرات، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے اس چینل احسن الوظائف ٹی وی کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔